Then there is coma. Coma क्या हुआ? State of eye closed state, eye closed unconscious state in which the patient is not able to respond even with the stimulation like pressure on the supraorbital ridge. Normal stimulus तो होगा ही नहीं. Then if you are applying a pressure on the supraorbital ridge, यहाँ पे nerve होता है, उसको stimulate करते हैं, supraorbital nerve. Okay, तो must have seen कि यहाँ पे डॉक्टर्स यहाँ पे चेक करते हैं, इधर प्रेशर लगाते हैं, है ना? And also sternum, यहाँ पे भी लगाते हैं प्रेशर, nail bed पे लगा के देखते हैं. Okay, and that is called the state of coma. But that coma will be temporary or permanent also. Okay, the coma may proceed to a permanent state of unconsciousness. That is the क्या हो सकता है, like brain death. That is a permanent state of unconsciousness. The patient cannot be brought back. Irreversible unconsciousness is there in brain death. And also एक तो ये जा सकते हैं, brain death में जा सकते हैं, या the subject में भी aroused back, conscious भी हो सकते हैं, और the third state में भी the subject may be in a vegetative state. Vegetative state, that is the vegetative state क्या हुआ? Cerebral cortex तो काम कर रहा है, brain system काम नहीं कर रहा. Okay, that is the vegetative state. Okay, and maybe a temporary or a coma हो सकता है, temporary or permanent. Then there is locked in state. एक locked in state क्या हुआ? The subject is able to move his eyes only vertically, no other movement possible. State of paralysis without loss of consciousness. State of paralysis without unconsciousness, loss of unconsciousness. Patient is completely paralyzed except for the muscles which are served by the midbrain structures. That is, the vertical eye movement and blinking is possible on. उसको हम कहते हैं locked in state. Okay. Then there is persistent vegetative state. इसमें क्या होगा? हमारा cerebral death भी कहते हैं. हमारा brain stem function है ना, preservation of brain stem function. Okay. Vegetative state, it is also known as cerebral death. In this there is normal sleep-wake cycles, or but there is no response to the external stimulus, and there is diffuse injury to the brain with the preservation of some brain stem functions may be preserved. है ना, उसका हार्ट बीट चल रहा है ना, रेस्पिरेशन चल रहा है. Okay, but still the subject is unconscious. That is called vegetative state. Subject has gone into a vegetative state. Then there is historical background of brain death. Before the discovery of ventilators, mechanical ventilators, you must have heard ventilators, it was the concept of death was revolving around the respiration and heart, cardiorespiratory arrest, है ना, cardiorespiratory function, preceding 50s, before the discovery of mechanical ventilators. After that, what happened that in 1959, the concept of brain death, yeah, death by neurological criteria, was put forward by these two scientists, Mollaret and Gowland, है ना, and we call it Coma defacy, the concept there उसमें. And what was brain death? We told that it is an apneic state. Apneic means cessation of breathing. No, कहते हैं ना, temporary cessation of breathing. It is an apneic state, and the comatose subject is comatose without brain stem reflexes. Brain stem reflexes नहीं, like EEG activity भी नहीं होगा, electroencephalographic activities flat, no EEG activity. That is apnea state, comatose patient. Subject is in coma, but without brain stem reflexes.
ओके, उसके बाद कॉन्सेप्ट और मूव फॉरवर्ड हुआ 1968 में. A group of faculty from Harvard, they give the concept of Harvard brain death criteria. उसमें क्या किया, EG criteria plus some clinical concepts. Then there was Uniform Determination of Death Act, and it was established as a legal basis, okay, for determining the neurological determination of death. In 1987 बच्चों के लिए उन्होंने अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, they gave the criteria for children in the brain death in children. Okay, 1995 में give guidelines for determination of brain death by neurological criteria. तो डेथ के स्टडी को हम क्या कहते हैं, एनाटोलॉजी. एनाटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइंस डीलिंग विथ डेथ. ओके, स्टडी ऑफ डेथ को हम एनाटोलॉजी कहते हैं. एंड यू नो, complete and irreversible stoppage of circulation, respiration, and also CNS function, brain function. Okay, that is the definition of death. As long as the oxygenated blood reaches the brain stem, life will exist. So brain death is an irreversible destruction to the brain, irreversible destruction to the brain, with the resulting absence of all the cerebral cortical function and brain stem function. And it should be suspected in any patient who are comatose. But you cannot tell directly that कोई comatose patient मिल गया तो आपको brain death उसको बोल देना. Okay, because there may be other causes also of coma. So brain death may be suspected in any patient which is rendered deeply comatose and apneic from an injury to the brain, like brain trauma हो गया, है ना, brain concussion. So what is the mechanism here? That when there is a neurological insult, when there is insult or injury to the brain, there is swelling in the neuronal cells, and that swelling will increase the intracranial pressure. If the pressure is increased, the blood flow will be reduced, obviously. So if there is intracranial pressure is more than the mean arterial pressure, this vicious cycle will increase, go and, you know, vicious cycle क्या होगा, proceed करता रहेगा, and there will be the ultimate result will be the brain death. So before diagnosing a patient as brain death, before labeling it as a brain death, we should rule out these reversible causes of coma. You should rule out these causes of reversible causes of coma, because there are certain causes which are reversible, that are called confounders. Confounding मतलब confusion वाली जो चीज है, उसको rule out करना होगा. So a subject may be in deep alcoholic intoxication and वो आपको लगेगा कि ये coma हो रहा है ना, but that is reversible. And there may be a drug that is neuromuscular blockade. इसमें क्या होगा, सारे मसल्स आपको काम नहीं करेंगे, and subject may be ऐसा लगेगा कि ये कोमा में है. Okay, and there may be certain CNS depression drugs. Okay, like subject may be in hypovolemic shock. Then there may be some endocrinal abnormalities, electrolyte abnormalities. Then also you should rule out hypothermia, because extreme hypothermia may present as a coma. Okay, and you should also confirm that the coma is due to some known cause. जैसे कोई किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, या उसको क्या हुआ, कोई ट्रॉमा हुआ ब्रेन को, है ना. एंड द गैप बिटवीन द कॉमा, जब कॉमा सब्जेक्ट आपके पास आया कोमा में, एंड ब्रेन स्टेम डेथ या ब्रेन डेथ आप लेबलिंग करने के पहले,
देयर शुड बी मिनिमम गैप ऑफ 4 आवर्स. ऐसा नहीं आया 5 मिनट में आपने उसको डायग्नोज कर दिया ब्रेन डेथ. देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 आवर्स एट लीस्ट बिफोर लेबलिंग इट एज अ ब्रेन डेथ. ठीक है. And if there is certain cause, that is hypoxia is the cause, then the gap should be more, that is 12 hours. Okay. And who makes the diagnosis of brain death? Obviously the specialist, especially the intensivist या ICU के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, और न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन, they make the diagnosis. And because it is a legal case, okay, so it should be determined by 2 doctors. 2 doctors को verify करेगा. One must be the specialist, and that should be recognized by the appropriate authority, like hospital में होते हैं medical superintendent होते हैं, designated person होता है उसकी, who has performed earlier exposure to the certification of brain death, जिसने पहले भी कर रखा है ना. And others should also be a specialist, but preferably be the specialist. अगर नहीं है, at least he should have the 6 years experience, है ना. अगर स्पेशलिस्ट नहीं है, मेडिसिन के, जनरल मेडिसिन के ही है, okay, but he should have the experience of at least 6 years, and he should possess the skill and knowledge in performing the certification of the brain death. And what is the criteria for declaring the brain death? There are certain criteria to declare the subject as brain death. Like 3 clinical criteria must be met. ये 3 criteria आपको मिलना चाहिए before labeling it as brain death. That the subject should be in coma, obviously deep coma, unresponsive, है ना. And also there should be absence of reflexes, brain stem reflexes. There are certain brain stem reflexes. हमने देखा कि वहाँ पे क्या होते हैं, pupils भी, है ना, वहाँ पे सेंटर्स है ना, थर्ड नर्व के लिए 4, 5, 6, ये सब reflexes देखते हैं, चेक करते हैं. So there should be absence of reflexes, brain stem reflexes, and the subject should be apnea test करते हैं, है ना. थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, जो वेंटिलेटर सब्जेक्ट क्या होता है, इस तरह के सब्जेक्ट यूजुअली मैकेनिकल वेंटिलेटर्स पे होंगे, है ना. उसको बाहर से हम क्या देते हैं, उसको रेस्पिरेशन देते हैं, और ड्रग्स पे होंगे, आइनोट्रोपिक ड्रग्स वगैरह पे होते हैं, है ना. तो एपनिया टेस्ट करते हैं. एपनिया मीन्स दैट इज अ सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग. ब्रीदिंग स्टॉप करके देखते हैं, जो वेंटिलेटर से आ रहा था, थोड़ी देर के लिए वेंटिलेटर्स हटाते हैं, है ना. वेंटिलेटर से हटाएंगे तो क्या होगा, अगर नॉर्मल सब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, थोड़ा मूवमेंट होगा उसको. व्हाई इज इट सो? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल बढ़ने लगता है. अगर स्टॉप करो आप रेस्पिरेशन को, विदहोल्ड करके रखो, तो क्या होता है, थोड़ी देर के बाद आप रोक नहीं पाते. व्हाई इज इट सो? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड PCO2 का लेवल बढ़ने लगता है, एंड दैट स्टिमुलेट्स योर रेस्पिरेटरी सेंटर. So we do the apnea test here. So these 3 criteria must be met before labeling it as brain death. So cortical functions के लिए क्या देखेंगे? No spontaneous movement. Okay, that is the unconsciousness के लिए चेक कर रहे हैं. No spontaneous movement with there, no eye opening, and there should be no any response to auditory, visual or any command. है ना. उसमें क्या करते हैं हम, ग्लासगो कोमा स्केल देखते हैं. हैव यू हर्ड ऑफ दिस स्केल? कोई ट्रॉमा का पेशेंट आता है तो GCS चेक करते हैं, ग्लासगो कोमा स्केल. आप आगे बढ़ोगे, है ना, जब हॉस्पिटल में जाओगे तो GCS स्केल, उसमें आई ओपनिंग, EVM चेक करते हैं. आई ओपनिंग, वोकल रेस्पॉन्स एंड मोटर रेस्पॉन्स. नॉर्मल रेस्पॉन्स इज 15/15, जैसे अपनी मसल पावर आपने चेक करा था, है ना. मोटर रेस्पॉन्स में किया था ना, पावर चेक मसल. उसी तरह यहाँ पे होता है, स्केल चेक करते, ग्लासगो कोमा स्केल चेक करते, है ना. अगर E1, V1, M1 है, इसका मतलब वो अनकॉन्शियस स्टेट में, है ना. सो नो रेस्पॉन्स आफ्टर ऑडिटरी, विजुअल और एनी वर्बल कमांड.
and there is no any motor response to any deep noxious stimulus, है ना, पेन आप बाहर से चुबाओ, इसको कुछ भी करो, no response will be there. And also to no response to the nail bed pressure, supraorbital ridge, इस तरह करके देखते हैं, है ना, दबा करके देखते हैं उसको, स्टर्नम पे प्रेशर दे के देखते हैं, कोई मूवमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं, है ना. देन यू हैव टू चेक द ब्रेन स्टेम फंक्शन, absence of brain stem reflexes. So these reflexes you should check. That is the pupillary reflex, then the corneal reflex, pharyngeal or gag reflex, then tracheal or cuff reflex. Then there is Dolce reflex, which is also called oculocephalic reflex. Then there is oculovestibular reflex, है ना, इसको कैलोरिक टेस्ट भी कहते हैं. Apnea, then the apnea testing you should do. So you should check all these reflexes. Pupillary reflex, you all know these reflexes. How to check this? To make a wisp of cotton. Pupillary reflex में क्या होता है? एक डायरेक्ट pupillary reflex होता है, एक इनडायरेक्ट pupillary reflex होता है. उसमें हम क्या करते हैं, जिस साइड में हमें चेक करना है, जिस साइड में, उसमें हम टॉर्च को उसको लाइट देते हैं, है ना. What happens? What will the response? There will be constriction of the pupil, है ना. लेकिन इसमें क्या होगा? There is no reaction to any pupil, any light given to that eye. There is unresponsive to the light stimulus, and also it will be fixed and dilated pupil. इसमें कहते हैं fixed and dilated pupil हो जाता है. आप लाइट दोगे तो कुछ उसको response नहीं करेगा. Okay, pupil may be mid-sized or it may be totally dilated, full dilated, and it will be fixed, no response at all. No constriction to bright light. जब bright light रहते हैं तो क्या होता है, constrict करता है light, हमारा pupil constrict करता है. That is called the pupillary light reflex कहते हैं. So the pupillary light reflex will be absent. Okay. So fixed and dilated pupil will be there, non-reacting to light. Then there is corneal reflex. You all know this reflex. So you make a wisp of cotton, है ना. वो क्या करते हो आप, कॉर्निया के पास टच करते हो. कॉर्निया में कहाँ पे करते हो टच, है, लिम्बस के पास, स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन, दैट इज कॉल्ड द लिम्बस आई थिंक, है ना. यहाँ पे टच करते हैं. And what will the response? There will be blinking response. That is the protective response. So this response will not be there. ठीक है. So corneal reflex. Then you should also do the gag reflex and cough reflex. Gag reflex, that is the pharyngeal reflex. उसमें हम क्या करते हैं, कोई टंग ब्लेड होता है ना, टंग डिप्रेशन आपने देखा होगा, उसको हम क्या करते हैं, posterior pharyngeal wall को टच करते हैं, है ना. And what will be there? So to stimulate the posterior pharynx with the tongue blade. So there is a contraction of that muscle. जो आपके throat के जो muscles है posteriorly, वो क्या हुए, contract करेंगे. That is the gag reflex. So there will be no gag reflex और no cuff reflex. Cuff reflex के लिए क्या करेंगे हम? सब्जेक्ट इस तरह के पेशेंट क्या होते हैं, वेंटिलेटर पे होते हैं, है ना. तो वेंटिलेटर में इंडोट्रैकियल ट्यूब डालते हैं, ट्यूब एक डालते हैं ना अंदर, है ना, इंट्यूबेशन करते हैं, उसमें इंडोट्रैकियल ट्यूब डालते हैं. तो उसमें हम क्या करते हैं, वी स्टिमुलेट थ्रू द इंडोट्रैकियल ट्यूब, वी ट्राई टू टच द कैरिना एरिया, है ना, और जो ट्रैकियल बाइफर्केशन है वहां पे हम टच करने की कोशिश करते. तो अगर आप किसी चीज से टच करोगे वहां पे ले जाकर, लाइक सलाइन का आपने जो ट्यूब्स है उसको लेके गए, है ना, तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट कफ करने लगेगा, नॉर्मल रिस्पॉन्स होगा, है ना. उस एरिया में इरिटेट होगा तो क्या होगा, कफिंग रिफ्लेक्स विल बी देयर इन नॉर्मल सब्जेक्ट्स, जो ब्रेन डेथ नहीं होगा. बट इन ब्रेन डेथ देयर विल नो एनी कफ रिफ्लेक्स. Then you do the oculocephalic reflex.
ये क्या होता है? डॉल्स आई रिफ्लेक्स भी कहते हैं। Whenever you move your head, हेड को जब आप मूव करते हो 90 डिग्री से, तो क्या होता है? आपके आईज अपोजिट साइड में मूव करते हैं। इधर करोगे तो इस साइड जाएगा, इधर करोगे तो इस साइड जाएगा, ये होता है ना। So that is called the doll's eye. So rapidly turn the head 90 degree on both the sides in lying down position. So what happens that normal response is deviation of the eyes to the opposite side of the head. In brain death, what will happen? This will be absent. No oculocephalic reflex will be seen. Okay, you can see here. Eyes to the right, head to the left, so eyes right हो गए ना, central है ये, opposite to that. Then there is vestibulo-ocular reflex. Vestibular system को हम क्या करते हैं? इसमें stimulate करते हैं. That is the semicircular canal area, है ना, उसको हम stimulate करते हैं. How will you stimulate it? By giving a cold saline solution in the ear. Before doing this experiment, we check the ear for any wax in the ear. कोई wax तो नहीं है, it should be clean, cerumen नहीं होना चाहिए. Okay, so tympanic membrane intact होना चाहिए before doing this step. इसमें हम क्या करते हैं? कोल्ड सलाइन सोल्यूशन लेते हैं एंड इसमें हम क्या करते हैं? पुश करते हैं. अप्रोक्सीमेटली 50 ml ऑफ लेते हैं syringe and subject is in supine position and head is elevated at 30 degree, है ना. तो इसमें क्या होगा response? Normal response will be there will be nystagmus in the eye, है ना. nystagmus होगा, मूवमेंट होगा, इसका आईज आपके मूव करेंगे, ठीक है. nystagmus होगा, ठीक है. and what happens that no, not comatose, there will be nystagmus will be seen, है ना. कोमा विद इंटैक्ट ब्रेन स्टेम, अगर ब्रेन स्टेम इंटैक्ट है उसका, कोमा में है सब्जेक्ट एंड देयर इज इंटैक्ट ब्रेन स्टेम, बोथ आईज डेविएट अवे द कोल्ड वाटर, है ना. COWS, अगर आपने पढ़ा, नहीं पढ़ा होगा आगे आप पढ़ोगे ईयर जो आपको पढ़ाया जाएगा. कोल्ड टू अपोजिट साइड एंड वार्म टू सेम साइड, इस तरह से डेविएट होता है. COWS. If there is brain stem is intact, comma with intact brain stem, क्या? So if there is comma with intact brain stem, both eyes will tonically deviate away from the cold saline solution. इस साइड में आपने दिया, opposite साइड में जाएगा. Okay. And if there is brain stem death, there is no any eye movement, है ना, कुछ मूवमेंट नहीं होगा, nystagmus भी नहीं रहेगा, opposite साइड में नहीं जाएगा. But if there is intact brain stem, no cortical response, what happens? That movement of the eye on one side of the stimulus, that is the abnormal response, है ना, same side में जाता है. Then there is apnea testing. As we have discussed that this patient is on ventilator. नॉर्मली क्या होता है, जो ब्रेन डेथ के पेशेंट्स होते हैं, ब्रेन स्टेम तो उसका काम नहीं कर रहा है, ब्रेन स्टेम डेथ नहीं कर रहे, है ना. ब्रेन स्टेम उसका काम नहीं कर रहा है, उसमें रेस्पिरेशन हो नहीं रहा है स्पॉन्टेनियसली. So we give respiration from mechanically, we give the respiration through mechanical means, that is ventilator means, है ना. एंड हार्ट को बीट करने के लिए हम क्या करते हैं? ड्रग्स देते हैं, आयोनोट्रोपिक ड्रग्स. आपने सुना होगा क्या होता है? रिस्पॉन्स कुछ नहीं कर रहा, सब्जेक्ट क्या होता है? ड्रग्स दे रहे हैं. यूजुअली जो डॉक्टर जो इमरजेंसी में काम करते हैं या आईसीयू में काम करते हैं, ये एक्सपीरियंस करते हैं. सब्जेक्ट कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है ना, सब्जेक्ट ऑलमोस्ट डाई है, डेथ हो चुका है, लेकिन क्या है, उसको ड्रग्स दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसका पल्स थोड़ी बहुत आपको फील हो रहा है ना. सो दैट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन इन दैट सेंस. सो दैट इज द ब्रेन डेथ. इन केस व्हाट हैपेंस दैट इन दो सब्जेक्ट्स, द सब्जेक्ट इज ऑन वेंटिलेटर, रेस्पिरेशन तो उसको वेंटिलेटर से मिल रहा है, और हार्ट को चलाने के लिए क्या होता है? आयोनोट्रोपिक ड्रग्स देते हैं, लाइक डोपामिन, एड्रेनलिन का इंजेक्शन देते हैं, आइट्रोपिन का इंजेक्शन चलते रहते हैं, isn't it? So a patient who is sick enough for brain death testing will be on ventilator and he cannot breathe without the ventilator.
वेंटिलेटर हटाएंगे तो बंद हो जाएगा, है ना। तो इन ऑर्डर टू टेस्ट, अब इसको टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, ब्रीदिंग रिफ्लेक्स इज इंटैक्ट और नॉट। एपनिया टेस्ट क्या हुआ, ब्रीदिंग टेस्ट करते हो। सब्जेक्ट को क्या करते हैं, वेंटिलेटर से थोड़ी देर के लिए हटाते हैं और सब्जेक्ट को प्री ऑक्सीजनेट करते हैं 100% ऑक्सीजन से। जैसे आप हम करते क्या होता है, अपने सांसों को रोकते हैं, उसके पहले आपको बोला जाए लंबी सांस लेकर के रोक लो, है ना। ब्रेथ होल्डिंग हम टेस्ट कराते हैं यहाँ पे स्टेथोग्राफी में। उसमें क्या करते हैं, लंबी सांस लेने के लिए बोलते हैं, लंबी सांस लेकर के रोक लेते हैं, है ना। रोकने के बाद क्या होगा, breath, there is certain time period to which the subject can hold his breath. That is called the breath holding time, which is approximately 30 to 60, 90 seconds. है ना। उसके बाद spontaneously क्या होगा, you cannot stop your breath. You will, है ना, आपको क्या होगा, spontaneously breath करने लगोगे, because the PCO2 level is increased. तो उसमें सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। इसमें भी क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट को वेंटिलेटर से हम हटा रहे हैं और डायरेक्टली हम कैरिना के पास में 100% ऑक्सीजनेट करते हैं, बाहर से हम ऑक्सीजनेशन देते हैं। जैसे हम लंबी सांस लेने के लिए बोलते हैं आपको, लंबी सांस लेके रोकने के लिए, और उसके बाद क्या करते हैं, 100% ऑक्सीजनेशन देने के बाद सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, PCO2 लेवल इंक्रीज करेगा, है ना, टिश्यू मेटाबॉलिज्म होगा, PCO2 इंक्रीज होगा। तो क्या होगा, अगर सब्जेक्ट ब्रेन डेथ नहीं होगा तो क्या होगा, उसके जो आपको सेंट्रल आपने पढ़ा है ना, रेस्पिरेटरी कंट्रोल, है ना, जो आपको सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स के थ्रू होता है ना काम, वो क्या होता है, CO2 बाईपास करके चला जाता है इन द मेडुलरी एरिया, है ना। DRG एंड VRG यू मस्ट हैव रेड, डॉर्सल रूट गैंग्लियन, वेंट्रल रूट गैंग्लियन, जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, आई न्यूरॉन्स एंड ई न्यूरॉन्स, है ना। तो वो क्या होता है, उसको स्टिमुलेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो PCO2 बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड परमेबल टू द ब्लड ब्रेन बैरियर, है ना, अल्टीमेटली H+ आयन उसको स्टिमुलेट करता है, H+ आयन, बट बिकॉज हाइड्रोजन आयन इज नॉट परमेबल टू द ब्लड ब्रेन बैरियर, तो PCO2 लेवल बढ़ता है, वो क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, अंदर में जाकर वो H+ आयन इंक्रीज करता है लेवल, and that stimulates the central chemoreceptor area which stimulates your respiratory drive, है ना। तो क्या होता है, आप जब आप सांस रोकते हो तो क्या होता है, जब आपका ब्रेक होता है, दैट इज कॉल्ड द ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट के बाद आप लंबी जल्दी जल्दी सांस लेते हो थोड़ी देर के लिए, हाइपर वेंटिलेट करते हो, isn't it? So that is the concept here also, and उसको क्या करते हैं, हम ABG लेते हैं, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस करते हैं। पहले हम अपने टेस्ट करने के पहले क्या करते हैं, आर्टरी से हम क्या करते हैं, ब्लड ले लेते हैं, उसको कहते हैं आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। उसमें हम क्या करते हैं, pH देखते हैं, बाइकार्बोनेट लेवल देखते हैं, PCO2 लेवल है उसमें आ जाता है इस टेस्ट में, ABG टेस्ट में। ICU में सारे पेशेंट को किया जाता है ABG टेस्ट, है ना। तो ABG टेस्ट देखते हैं, उसमें देखते हैं H+ आयन का लेवल देखते हैं, PCO2 का लेवल चेक करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट पीपल इवन दोज हु हैव सीवियर इलनेस, जो बहुत ज्यादा बीमार होगा वो भी क्या होगा, PCO2 अगर इंक्रीज हो जाएगा, दैट विल अटेम्प्ट टू ड्रॉ द ब्रेथ, है ना, थोड़ा सा ब्रीदिंग रेस्पॉन्स उसमें मिलेगा, PCO2 लेवल चूंकि इंक्रीज हो जाता है हटाने से, है ना, वेंटिलेटर को। एंड व्हेन ए पर्सन इज ब्रेन डेथ, the brain is unable to send any signal and so there will be no any response, कोई ब्रीदिंग उसको एफर्ट नहीं मिलेगा, है ना। अगर हटा दो फिर भी उसको कोई एफर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ब्रेन डेथ नहीं होगा तो क्या होगा, उसमें थोड़ा रेस्पॉन्स मिलने लगेगा, है ना, थोड़े बहुत मूवमेंट मिलेंगे। Then there are other tests also which are called ancillary tests. Ancillary tests means which are supporting tests, and these are confirmatory tests actually. These are mainly radiological tests which are done to confirm the brain death, है ना। इसमें क्या होता है, ancillary imaging tests, these are necessary in situations जहाँ पे आपको क्या है, कंफ्यूजन हो रहा है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में और एपनिया टेस्ट में, है ना, वहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है या उसके वैलिडिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क आ रहा है, उस केस में हम ये कंफर्म टेस्ट करते हैं,
and these studies are done to see if the blood is traveling to the brain. क्या करते हैं, ब्लड फ्लो को देखते हैं हमारे सेरेब्रल एरिया में जा रहा है नहीं जा रहा है, ओके, टू द ब्रेन थ्रू द ब्लड स्ट्रीम. इफ द स्टडी शोज दैट नो ब्लड इज रीचिंग टू द ब्रेन, अगर ब्लड फ्लो नेगेटिव आ रहा है, देन देयर इज ब्रेन डेथ. एंड ऑल्सो देयर इज ईईजी टेस्ट विच इज डन, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी टेस्ट, है ना. नॉर्मली देयर विल बी सम रेस्पॉन्स, लेकिन इसमें क्या होगा, आपको फ्लैट ईईजी मिलेगा, साइलेंट ईईजी. And also a drug is given that is called atropine. Atropine drug सुना है ना? This is parasympathetic drug. ये भी इमरजेंसी ड्रग में यूज करते हैं along with adrenaline, है ना. ये क्या करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है ना. So what is done? The atropine, इसमें क्या होता है, ब्रेन डेथ वाला पेशेंट होगा अगर, है ना, इफ द हार्ट रेट इंक्रीजेज, अगर एट्रोपिन देने के बाद हार्ट रेट इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ब्रेन डेथ नहीं है. ओके, अगर एट्रोपिन दे रहे हैं, है ना, और हार्ट रेट इंक्रीज नहीं हो रहा उसका, इसका मतलब ब्रेन डेथ. ओके, इफ द एट्रोपिन आर एबल टू अंडरस्टैंड, एट्रोपिन ये क्या होता है, पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है हमारा, ठीक है. इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड एज एन एंसिलरी टेस्ट और बिकॉज इट इज नॉट इफेक्टिव इन ब्रेन डेथ इंडिविजुअल. तो ब्रेन डेथ इंडिविजुअल होते हैं ना, उसमें ये काम नहीं करते, तो हार्ट रेट पे रिस्पॉन्स नहीं आएगा. देन देयर आर सर्टेन अदर कन्फर्मेटरी टेस्ट. ईईजी में क्या होगा, नॉर्मल रिस्पॉन्स है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रो सेरेब्रल साइलेंस. देयर विल सर्व सम आर्टिफैक्ट, इसको हम आर्टिफैक्ट कहते हैं, है ना. देन देयर आर cerebral angiography also which is done. This is the normal blood flow here, and you can see there is no intracranial blood flow. Then there are other tests like technetium isotope scan test करते हैं, 99 scan test. इसमें रेडियो आइसोटोप देते हैं, है ना, and there is no intracranial blood flow is seen, जिसको कहते हैं hollow skull appearance. Then there are other tests also, that is MR angiography भी करते हैं, transcranial ultrasound भी होता है. These are all the confirmatory tests. जब लीगल कोई अगर रिक्वायरमेंट होता है इस तरह का, तो उस केस में ये confirmatory टेस्ट करना जरूरी होता है. Then there are implications of this. When a person is pronounced brain death, that is, इसका मतलब subject is legally dead. Subject is legally dead. If the subject is brainstem death or brain death, legally उसका डेथ हो चुका है ऑलरेडी, ओके, एंड उसका जो डेथ सर्टिफिकेट में वही डेट आएगा, ब्रेन डेथ वाला, ओके. नॉट व्हेन, अगर हम बाद में क्या करते हैं, तो उसको वेंटिलेटर से हटाते हैं, सब्जेक्ट डाई कर, वो हट जाता है, उसका सारा स्टॉप हो जाता है, ठीक है. वो पीरियड को नहीं लेते हैं, जब ब्रेन डेथ हुआ है उस पीरियड को हम लेते हैं. दैट इज अ लीगल डेथ. एंड this is important in case of organ donation. Families of brain dead patients, they are provided with the option for organ donation, है ना. organ donation का organ donation के लिए क्या होता है, committees हैं, there are different NGOs which are working for that, and families of brain death patient must be provided that option of brain death organ donation. If the subject declines for donation, then what happens that we separate the life support system. जो बाहर से हमने दे रखा था, ventilator and all the drugs, we remove all those things. If the family declines the donation, the mechanical ventilator and medicines, these are discontinued, after which the heart and respiration both will stop, isn't it? And if the family says yes, then we keep that support system intact, okay. Until then we make the arrangement for donation. If the family says yes to donation, the regional organ जो procurement center होते हैं उसको inform करते हैं, and they're involved, and the donor's body is kept functioning by, till then it is kept functioning by artificial means, by ventilator and other drugs, okay. And in many cases
क्या होता है फॉरेन कंट्री में स्पेशली यूएस यूके में उनके ड्राइविंग लाइसेंस पे लिखा रहता है उनका विल, आई एम रेडी फॉर डोनेशन फॉर माई ऑर्गन, दिस ऑर्गन एंड दैट ऑर्गन, एंड इट इज kept there in the driving license, their driving license. The individuals have already made their decision to donate, and this may be indicated their choice in their driving license. Okay, so this is all. You will learn more about this in your anesthesia classes.